Welcome to video 2. So I have this LG oven, microwave oven, which has a circle plate. Microwave oven always has a circle plate in the center. Okay? Plus, you can clean this plate just by picking it up, washing it properly, cleaning it, dry this plate and then place it on the same thing. Okay? Now I'm going to go closer to the video and show you all the features I have in LG oven. Almost all the ovens are same. Okay, so first I'm going to teach you how to roast a papad. यहाँ पे एक छोटा सा बटन है which is a start button. ओके जैसे मैं स्टार्ट दबाऊंगी अब इसका डोर ओपन है तो यहाँ पे आ रहा है देखो डोर. एज सुन एज आई क्लोज द डोर ये अपने आप 30 सेकेंड पे स्टार्ट हो जाएगा 30 सेकेंड्स पे. ओके क्लियर. किसी किसी के ओवन में 1 मिनट भी होता है. ओके यूजुअली पापड़ को 1-1.5 मिनट लगता है तो नो नीड टू वरी आप 1 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो. ओके नाउ जस्ट होल्ड ऑन. I'm gonna use ready-made papad to show you how it is baked or roasted in microwave oven. So I'm just gonna keep the papad in the center of the plate, close the oven door, okay, and gonna keep it for 1 minute completely. In some ovens it takes 40 seconds also. In some ovens it takes 1 minute. I'm gonna keep it for 1 minute. I like it to be crispy and reddish papad. Okay, some people keep it whitish. If you can see, the plate is rolling inside. जैसे आप खाने को हीट करते हो वैसे ही आपको 1 मिनट तक पापड़ रखना है सेंटर ऑफ प्लेट पे. ओके लुक एट दिस. अभी छोटा पापड़ था. दिस वुड हैव टेकन 40 seconds to bake. Okay, now let's see. Crispy and properly roasted. Let's move on to video 3.